Now for the weather. Goa will get heavy rain on 5th, 6th and 7th September. This is due to the formation of low pressure over Bay of Bengal. Heavy rainfall over isolated areas are forecast for the next week and it will begin from 4th of September. Wind speeds are likely to be 40 km per hour along with intense spells of rain. The IMD has issued weather warning for the period until 7th, as well as possible impact of increased rainfall and strong wind, such as rough sea conditions, uprooting of weak trees and landslides, mudslides and rock slides in vulnerable areas. Possible impact of increased rainfall and strong wind during the period from 4th to 8th September 2021. Water inundation of low-lying areas in urban areas, uprooting of weak trees, collapse of weak structures and buildings, landslides, mudslides, and rock falls in vulnerable areas. Longer disruption of municipal services such as water, electricity, etc. Rise of water level in rivers and canals, water flowing over small bridges and culverts. Some communities and islands temporarily cut off or not accessible. Damage to all types of crops due to water inundation. Rough sea conditions preventing tourists from entering the sea. नमस्कार, आप देख रहे हैं पिछले 24 आवर्स में रिपोर्ट किए गए रेनफॉल के वैल्यूज़ गोवा के डिफरेंट स्टेशनों से, जो आज 8:30 AM को 4 सितंबर की 8:30 AM को जो रिपोर्ट किया गया, दैट रेनफॉल वी कैन सी हियर। उसमें से 3 स्टेशनों में आज के दिन हेवी रेनफॉल रिपोर्ट किया गया, यानी कि रेनफॉल एक्सीडिंग 6 सेंटीमीटर्स वॉज रिपोर्टेड फ्रॉम 3 स्टेशंस, मप्सा and then from Ila, and another station, another automatic rain gauge in Kankon reported 7, 6 and 7 centimeters respectively. So these 3 were the heavy rainfalls reported in past 24 hours. और अभी आज के दिन 4 सितंबर के दिन को हम देखा जाए तो actual rainfall is having a shortfall of only 1% from the normal rainfall seasonal total. And this value is expected to improve in the coming days because the rainfall activity is going to increase in the coming 7 to 10 days. So we are expecting that the deficit will be no more in the coming days and monsoon will be keeping up with its normal values. और आज के दिन का अगर सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम्स के बारे में बोला जाए तो एक सर्कुलेशन है बे ऑफ बंगाल में, और उसी सर्कुलेशन के कारण विद इन 48 आवर्स एक लो प्रेशर एरिया बे ऑफ बंगाल के ऊपर डेवलप होने के चांसेस हैं। एंड ये बे ऑफ बंगाल में जब लो प्रेशर डेवलप होगा तो उसके साथ गोवा और कोंकण में भी रेनफॉल इंक्रीज होने के चांसेस हैं। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग वेरी हेवी रेनफॉल, दैट इज रेनफॉल एक्सीडिंग 11.5 centimeters. That category of rainfall is called very heavy rainfall, and very heavy rainfall is very likely on 5th, 6th and 7th September at 1 or 2 places over North Goa and South Goa districts. And the heavy rainfall, that is rainfall exceeding 6 centimeters, that is very likely to continue over Goa for around 7 to 10 days from 4th September onwards, even though the spatial distribution may vary. The rainfall activity is going to get picked up from tomorrow onwards. Very heavy rainfall is expected from 5th, and if the rainfall activity continues, the impacts will be there from around 6th and 7th of September. तो अगर रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगा तो देर आर पॉसिबिलिटीज की एरियाज विच आर वल्नरेबल फॉर लैंडस्लाइड और flooding, localized flooding may get affected. So people living in such areas, please be watchful in case of continuous rainfall. Areas which are vulnerable for landslide and flooding, localized flooding, water inundation may get affected from around 6th onwards. तो हम देख सकते हैं जैसे ही रेनफॉल एक्टिविटी पिकअप होगा, वेरी हेवी रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम 5th सितंबर से, और
6 और 7 सितंबर को भी हम वेरी हेवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ऑरेंज कलर वार्निंग दिया गया है उन दोनों दिनों के लिए। उसके बाद वेरी हेवी रेनफॉल का प्रोबेबिलिटी कम है आज के हिसाब से, लेकिन प्लीज़ बी रेगुलरली अपडेटेड विद IMD's weather warnings in coming days, because the warning colors may get changed based on the location and intensity of weather systems that are forming in these coming days. अभी आज का हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी देर आर क्लाउड्स गेटिंग फॉर्म्ड ओवर अरेबियन सी, so clouds are moving westward towards the east direction with the westerly winds, so we are expecting heavy rainfall on 4th September and very heavy on 5th 6th and 7th September. उसके साथ फिशरमैन वार्निंग भी है, नॉट पर्टिकुलरली फॉर गोवा कोस्ट, लेकिन नाइबरिंग कोस्ट में जैसे कि नॉर्थ महाराष्ट्र कोस्ट में और कर्नाटका कोस्ट में भी विंड स्पीड 40 to 50 किलोमीटर्स गस्टिंग टू 60 किलोमीटर्स हो सकते हैं। इसलिए फ्रॉम 5th ऑनवर्ड्स फिशरमैन शुड नॉट वेंचर इनटू कर्नाटका कोस्ट, and from 6th onwards they should avoid venturing, from 6th and 7th onwards they should avoid venturing into North Maharashtra coast. Bureau Report, Goa 365.